Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Kichdi. Kichdi kya hai? Kichdi is a podcast about education, creativity, and learning. And in the world of podcasts, we're trying to do something slightly different. Uh, Listener, हमें दो तीन ही मिलते हैं उसकी वजह से, because we are very different from that perspective. But today we have a very special guest and a topic that is very close to both my heart and to our guest heart as well. Uh, Jawad, thank you so much for joining us today. Jawad जो है, he does so many things. He runs Alchemy Technology, so he's an entrepreneur. Uh, he has done a lot of work for building the entrepreneurial ecosystem in Pakistan. He teaches and he teaches finance, entrepreneurship, marketing, very diverse set of subjects. So we'll get into that a little bit as well. But सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये किस बला का नाम है? जब आपको आपके वालिदैन बचपन में कहते थे कि बेटा थोड़ा-सा पढ़ लिख लो, मेहनत कर लो, ग्रेड अच्छे आएँगे, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, तो जो बच्चे ये काम नहीं करते, वो प्रोफ़ेसर ऑफ प्रैक्टिस बन जाते हैं। But I think to be on a more saner, rational level, when you don't have a terminal degree, which is a PhD, and you want to teach, then you have multiple options. एक ऑप्शन आपके पास है कि आप एज एन एडजंक्ट और विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ाएं, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जाके PhD करें. तो there was a time in my life when I was very keen on doing a PhD, and I went and spoke to one of my professors and I asked him कि मैंने PhD करनी है. He said क्यों करनी है? I said कि I want to teach and I really enjoy teaching and this is something that's very close to my heart. And he said कि पढ़ाना है सिर्फ और रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, तो then don't do a PhD. Go work in the industry, get enough experience, and in 25-30 years somebody will come back to you and say कि जी आप आके पढ़ाएं. That is much better, much better path than actually spending 7 to 8 years of your life doing stuff that you would most likely not enjoy. That's how it started. And this conversation is now about, I think this happened in 99, so almost about 24 years ago. And I've been teaching for 27 years. 27 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ. तो जब पढ़ाने के बाद आई थिंक एक स्टेज आपके पास ऐसा आता है व्हेन यू थिंक कि एज अ विजिटिंग एन एडजंक्ट जब आप पढ़ाते हैं तो दैट शुड बी इनफ. And it's only when you come full time in the academic world that you realize how much work goes into thinking, collaborating, creating, sometimes new content, sometimes new avenues and new paths. And I think to my mind for the last 2.5 years, I'd been thinking very often about this. I've been very lucky, been very blessed. I've had a lot of opportunities, lots of exposure, lots of mistakes, lots of lessons learned. And my thought, once you cross 50 तो आप ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं इस चीज़ के बारे में. My thought was कि ये जो सब कुछ मैंने सीखा ये सब मेरे साथ चला जाएगा. तो मैं पढ़ाता तो हूँ, लेकिन when I teach as a visiting, I teach about 2 courses, and my engagement and my involvement is very different. So I want to at least run and see how this process would work. And I think so far it's been about 7 months. It's been very rewarding. Very hard work. A lot harder than I thought it would be, but very equally rewarding. Just for our audience, you are professor of practice at IB. School of Math and Computer Science. School of Math and Computer Science. So your experiences brought you to this place, but this is not the only different place it brought you to. This brings us to the topic, which is, and when I was thinking about it, I wanted to phrase it like parents' perspective to special education. But then because you are a teacher yourself as well, so it has more to it than just a parent's perspective. So उस perspective से पहले हमें बताइए हम बैठे हैं यहाँ पर ये कौन सी जगह? So this is Taha School. Taha is our youngest son, and Taha मियाँ जब पैदा हुए थे 2005 में, तो बहुत चुलबुले थे, बहुत भागते दौड़ते थे, किसी की आवाज़ नहीं सुनते थे. I think 2-2.5 साल की उम्र में both my parents and Fazia's parents said कि there is possibly a question mark, तो आप इन्हें assess कराएं या टेस्ट कराएं या किसी डॉक्टर को दिखाएं. जब हम डॉक्टर्स के पास लेके गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि जी ये तो बच्चा आपका ऑटिस्टिक है या ADHD है. तो 4-5
टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं. वी आर वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड कि हमें सही एडवाइस सही वक्त पे सही लोगों से मिल गई. तो पहली एडवाइस तो ये थी कि जी 2.5 साल की उम्र में आप बच्चे को जज नहीं कर सकते, गेज नहीं कर सकते. ऑल यू कैन असेस इज के लर्निंग माइलस्टोन्स में डिले है. तो देयर वाज अ लर्निंग माइलस्टोन डिले. एंड वो आई थिंक वो जो प्रोसेस चलता है, वो प्रोसेस जब आपको पहली दफ़ा ये खबर मिलती है एज अ फैमिली, एज अ फादर, एज अ मदर, तो पहला रिएक्शन तो डिनाइल होता है कि ये डॉक्टर्स को तो पता ही नहीं और हमें पता है और हमारा बच्चा है और ये तो हो ही नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो आई थिंक यू सॉर्ट ऑफ वर्क थ्रू दैट डिनाइल. फिर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है बिकॉज देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा और क्लैरिटी और क्लियर थिंकिंग अवेलेबल, और एटलीस्ट wasn't अवेलेबल से अबाउट 15-18 साल पहले जब तहा came into our lives. तो तहा sort of ran through a sequence. हमारी खुशनसीबी थी कि हमें शुरू में बहुत अच्छे स्कूल मिल गए जिन्होंने तहा को अकोमोडेट भी किया और तहा को सपोर्ट भी किया. एंड once those schools got to a stage where it was no longer possible for Taha to be part of the mainstream, the school where he used to go came to us and said कि देखें आप अपने बच्चे को ले जाएं, हम we are not in a position, at least we feel that we are not adding any value. I think as parents, for us that was a huge shock to our system because आपके जहन में होता है कि बच्चा लाइन पे लग गया है, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, एंड द स्कूल कम्स बैक एंड सेज कि नहीं जी आप समझते हैं बच्चा लाइन पे लग गया है, बट दैट्स नॉट ट्रू. वो अभी बहुत टाइम बाकी है एंड आप टाइम पॉसिबली ज़ाया करें. तो 2015 में व्हेन दिस हैपेंड, दिस इज़ आवर ऑफिस जहाँ पे हम नॉट दिस प्लेस बट जिस ऑफिस में हम बैठे हैं उसकी बेसमेंट हमारे पास थी, हमारे पास 2 कमरे थे. एक कमरा था और एक खुला सा बरामदा था. एंड फाजिया एंड आई हैड लॉन्ग चैट अबाउट क्या करेंगे. एंड फाजिया टेक वाज नो ही हैज़ टू बी पार्ट ऑफ अ मेन स्ट्रीम स्कूल बिकॉज मेन स्ट्रीम स्कूल के बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं. कम्युनिटी है, सोशल इन्वायरमेंट है, दोस्त हैं, डायरेक्शन है, गाइडेंस है, माइलस्टोन्स हैं. And we'll keep on exploring that path. And I said, just as a backup, we should get this facility ready. हमारे पास थोड़ा सा टाइम है because this happened. School told us this in February कि जी मई में आपका बच्चा का आखिरी साल ख़त्म हो जाएगा, अगस्त से you have to find a different place for him. तो फरवरी में हमको ये बताया तो पहले तो हम लड़ते झगड़ते रहे, हम सर मारते रहे, कुछ हमारे समझ में नहीं आया. फिर अप्रैल में आगे, मई में वी कुड क्लियरली सी कि जी देयर इज़ नो पाथ. हमने और स्कूलों से भी बात की. अच्छा होता ये है कि स्पेशल नीड्स एजुकेशन के अंदर अगर बच्चा एक स्कूल में घुस जाए और शुरू हो जाए तो वो स्कूल कोशिश करता है इसको जहाँ तक लेके चल सकता है चलने की कोशिश करता है. लेकिन अगर बच्चा उस सिस्टम से बाहर आ जाए तो कोई स्कूल नए बच्चे को स्पेशल नीड साइड पे अकोमोडेट नहीं करता बिकॉज दे ऑलरेडी हैव बच्चास विद इन देयर ओन. इनफैक्ट मेन स्ट्रीम में भी ये चैलेंजेस बड़े रिडिकुलस लेवल पे आते हैं. एब्सोल्युटली. सो आई सेड कि हम एक काम करते हैं, अगर हम ढूंढते रहते हैं बात करते रहते हैं लेकिन हम ये जगह तैयार कर लेते हैं क्योंकि जगह तैयार करने में टाइम लगेगा. तो 15 में आई थिंक हमें 3 महीने लगे. हमने अंदर का कमरा फर्श डलवाया, जो आप देख रहे हैं पीछे फ्रेमिंग करवाई, अंदर की जगह साफ़ करवाई. फिर हमने दोस्तों से पूछना स्टार्ट किया है कोई टीचर मिल जाए. अच्छा मैं भी पढ़ाता हूँ, फाजी भी पढ़ाती हूँ, दोनों पढ़ाते हैं. सो नेचुरल रिएक्शन था कि कितनी मुश्किल बात है पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाना है ना, कुछ ना होगा तो हम दुकान बंद कर देंगे और बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे. बट उसमें होता ये कि यू आर सो क्लोज टू योर चाइल्ड एंड द जब आप किसी और के बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं वो बच्चा नहीं पढ़ता तो वो आपके थोड़ी बहुत आपको तकलीफ होती है दिल को एज अ टीचर, बट डजंट सॉर्ट ऑफ हिट यू, डजंट पंच यू इन द फेस. लेकिन जब आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो बच्चा नहीं पढ़ता तो फिर दैट बिकम्स अ ह्यूज चैलेंज बिकॉज वो डायरेक्ट इमोशनल कनेक्शन होता है, वेरी ड्रेनिंग ऑल्सो. तो आर टेक वाज कि हमने जगह तो बना लिया, अब हम एक टीचर से स्टार्ट करते हैं. और जब आप कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं तो आपका एक बहुत सिंपल माइंडसेट होता है कि एवरी प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. तो एक स्मॉलर सब प्रॉब्लम है उसके टीचर ढूंढ लो, तो वो भी हम साइड पे चला रहे थे. एक प्रॉब्लम करिकुलम ढूंढो, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम की सीरीज़ है अमेरिका में जो मैथ साइंस ग्रेड स्कूल लेवल पे KG 1 से लेके ऑल द वे अप टू ग्रेड 5 तक चलती है. वो हमने अपने दोनों बच्चों के लिए ताकि तो बड़े भाई और बहन हैं उनके लिए इस्तेमाल की थी. तो वो आई वॉज अवेयर कि मौजूद है बिकॉज आर किड्स हैड अ लॉट ऑफ फन विद देम. तो पहले हमने वो किताबें ऑर्डर कर ली, फिर हमने टीचर ढूंढना स्टार्ट किए. और उन टीचर्स में से हमें एक बहुत ही अगेन अल्लाह की तरफ से बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं. थ्रू अ म्यूचुअल रेफरेंस वी फाउंड समबडी हु हैड एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लव. अच्छा इसमें भी एक चैलेंज और आया और वो चैलेंज ये आया कि
बिकॉज ताहा वॉज गोइंग टू अ मेन स्ट्रीम स्कूल, तो उसके पास एक शेडो टीचर 4 साल से था. एंड इन दो शेडो टीचर्स वी ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू गेट अ सेंस ऑफ कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क. तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आते थे वो से कि जी मेरे पास तो ट्रेनिंग है, मैं एक सिस्टम से गुजर के आया हूँ. और बहुत सारे लोग आते थे वेयर यू कुड क्लियरली सी कि ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन है बट फॉर्मल ट्रेनिंग एंड स्पेशल नीड्स एजुकेशन नहीं है. लेकिन दिल बहुत साफ है, दिल में बहुत गुंजाइश है, दिल बहुत गर्म है, राइट. और वो मोहब्बत जो है, वो मोहब्बत की वजह से बच्चा वो वर्क विथ यू. एंड स्पेशल नीड्स में आई थिंक जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, वो चैलेंज ये आता है कि अगर मैं नाराज़ हूँ या मैं परेशान हूँ या मैं गुस्से में हूँ या मेरे घर पे कोई और बोझ है एंड वो मैं अपने साथ स्कूल में लेके आया हूँ, या बच्चे के साथ लेके आया हूँ, तो बच्चा कैन सी दैट, बच्चे जो हैं सेंस कर लेते वो हैं. सेंस कर लेते हैं। और अगर मेरे दिल में मोहब्बत है तो वो भी सेंस कर लेते हैं. तो हम क्योंकि 4 साल तक इस सिस्टम से गुजर चुके थे, तो हमारे जहन में एक सेंस थी कि वी वर नॉट टू कीन ऑन ट्रेन रिसोर्सेज बट वी वर कीन ऑन पीपल जिनके दिल में गुंजाइश थी. तो हमें पहले एक मिली खातून, फिर एक और साहबजादे मिले. एंड आई थिंक उन दो से मिस समीना एंड सर हारिस, उन दो ने ये स्कूल स्टार्ट वहाँ किया, से काम सारा शुरू। वहाँ से काम स्टार्ट So किया. if you go a little back, you talked about कि जब पहली दफ़ा आपको, and there is something to my surprise that you mentioned कि the advice that you got was early diagnosed नहीं होना चाहिए, which is a fairly new practice that we see. पिछले 5-6 साल में this has kind of like become really big कि early diagnosis लोग अब avoid करते हैं। पहले डॉक्टर्स बहुत comfortably diagnose कर देते थे very early. And the challenge if you go back to the initial time because like you said हमारा सारा reference is very anecdotal. Yeah. We will like अच्छा कर लेगा, हो जाएगा, कैचअप हो जाएगा, और भी थे ऐसे बच्चे, ये भी होते हैं, वो भी है, ये भी है, all those things. बिल्कुल. वो catched up, he catched up, yeah, she catched up, so caught up basically. So uh, इस चैलेंज से जब आप गुजर रहे थे, obviously your family, your extended family, this is happening. और डिनायल की आपने बात की, आई वांट टू आस्क यू वो जो डिनायल के फेज से with the family dynamics that we have, how do you get out? And then another thing in my experience that I would love to know, and थोड़ा सा मैं और context add करता हूँ कि I have a son who's also named Taha, और I have basically two twins, Taha and Mano, and they are also differently able. They have ADHD and they have global development. So जब हम इस सारे चैलेंज की बात करते हैं, यू ट्राइंग टू गो थ्रू दैट एंड व्हेन आई वाज टेकिंग देम टू थेरेपी इनिशियली व्हेन दे वर डायग्नोज्ड, आई रियलाइज्ड कि एक तो ये चैलेंज है फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली एंड देन our knowledge of how brain works. And I'm not saying deeper understanding of Yeah. how neurons conduct electricity and message and make connections, all those things, but a very simple understanding of okay, every parent who would talk to me in therapies would assume that my kid has the same challenge because they think ब्रेन के साथ चाहे सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऑटिज्म है तो ऑटिज्म या जीडीडी तो सिर्फ जीडीडी ही होता है, या एडीएचडी तो सिर्फ एडीएचडी होता है। और in fact there are 10,000 ways this can happen and then each of these things have its own spectrum as well, end to end. So very early stage when a parent gets to know what is that journey like, what are the things that you can do right to set the path. So I think let's start first with diagnosis. So पहली diagnosis was कि आपका बच्चा ADHD है. And so I'll just walk you through the process. We went to one of the most well-known hospital and the most well-known consulting physician in this specific space. And हम बात करें 2005, 2005, 2000, 2007 की बात करें, ठीक है, 2007 की बात. तो अच्छा, और बच्चा जो है हमारा उस ज़माने में माशाल्लाह, Taha is about 2.5 years old and he has rockets in his body कि आपने इधर पकड़ा तो उधर चला गया, उधर पकड़ा उधर चला गया. तो छोटा सा कंसल्टिंग रूम का फिजिशियन का कमरा का होता है, उस कमरे में हम ताहा को लेके गए थे. एक तो 40 मिनट आप बैठे हैं बाहर, तो और बच्चा आपका जो है चारों तरफ घूम रहा है, दौड़ रहा है. तो 40 मिनट वो गुजरे. उसके बाद जब अंदर कमरे के अंदर गए तो हम कमरे में घुसे एंड ताहा इज़ लाइक a rocket motor in an enclosed room. यूं भी है, यूं भी है, यूं भी, यूं भी, यूं भी, यूं भी. And 30 seconds later, the physician says कि आपका बच्चा तो ADHD. अच्छा, अब
कॉन्वर्जेशन चल रही है पीछे, बट जब आप मेहनत नहीं करते अपने एग्जाम के हैं और आपका रिजल्ट आने वाला होता है, तो आप सुबह से फजर के बाद से दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ये पास हो जाऊँ, पास हो जाऊँ, पास हो जाऊँ, पास हो जाऊँ। आपका जब पर्चा आता है तो लिखाते हैं बड़ा सा FIR, राइट? यू कांट एक्सेप्ट दैट, राइट? तो वीड गॉन टू द फिजिशियन इन द होप, थिंकिंग कि वो तो क्या, ये नहीं सब कुछ ठीक है, आपके जहन में वहम गुमान है एंड दिस शुड बी ओके। तो एक तो वो शौक था कि आपको पता ये ADHD है, बट आई थिंक द सेकंड शॉक वाज कि यार आपको 30 सेकंड में पता चल गया। तो वो एक आप योर फर्स्ट रिएक्शन एज अ पेरेंट इज विदाउट के पेइंग अटेंशन आपने देखा नहीं वो, आपने ऐसे कह दिया। there is Your years of practice हम्म, and experience behind that diagnosis, but your first reaction है कि आपको क्या पता, आपने तो 30 सेकंड गुजारे बच्चे के साथ। जब आप हम एज व्हेन टीचर्स व्हेन वी टीच, वो बच्चा आता है और 4 5 6 हफ्ते आपके साथ गुजार लेता है इन योर क्लास, इन योर कोर्स, तो यू कैन टेल कि ये बच्चा निकल जाएगा, ये बच्चा निकल, एंड देन देयर आर स्टिल पीपल, देयर आर स्टिल स्टूडेंट्स हु सरप्राइज यू, who shock you, and that happens on a regular basis. But in most instances, your diagnosis is about 70-80% on the spot कि ये निकलेगा, ये पीछे रह जाएगा, ये निकलेगा, पीछे रह जाएगा। एक चैलेंज ये था, बट आई थिंक वो जब हमने सेकंड ओपिनियन लिया फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर्स, द फीडबैक दैट वी गॉट वाज के लेबलिंग बहुत कॉमन है, लेकिन असेसमेंट इज अ चैलेंज, एंड once you know that there is a challenge, you may not know कि exactly जो आपका स्पेक्ट्रम है ऑटिज्म का, वो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, it's a wide spectrum, right? You not know for sure कि where do you lie on that spectrum, but you know for a fact that you need help. So I want to be very, very clear about this कि assessment and diagnosis may be a question mark. We're not sure कि सही किया, गलत किया, ठीक हुआ, नहीं हुआ, but what we are sure about is that there is a development delay. And if there is a development delay, then the best thing that you can do is seek early intervention. So अगर वो फाइन मोटर स्किल्स में मसला आ रहा है, ग्रॉस मोटर स्किल्स में मसला आ रहा है, लैंग्वेज में मसला आ रहा है, कॉन्वर्जेशन में मसला आ रहा है, वो अगर आपको अच्छे थेरेपिस्ट मिल जाते हैं who can, and there are some really good therapists around, that can have a huge impact. So I think ताहा के केस में the best stroke of luck that we got was कि नीचे इसी गली में नीचे एक सेंटर है और वहाँ पे एक थेरेपिस्ट थी, and that therapist was a godsend. बिकॉज जब हम वहाँ से निकले और हमने कहा कहाँ जाएँ, तो हमने 3 4 लोगों से पूछा कि आप इनके पास चले जाएँ, उनके पास पहुँचे तो शी वॉज, जब आपके बच्चे पे ये ठप्पा लगता है ना, तो आपकी दुनिया हिल जाती है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू थिंक स्ट्रेट, एंड यू नीड अ काम एंकर, एंड गुड थेरेपिस्ट आर लाइक दीज काम एंकर्स, जैसे कि लेट्स टेक इट वन स्टेप अ टाइम, let's take it one session at a time and see where this goes. So I think that therapist played a huge role in Taha's life. फिर I think the second बहुत बड़ा फर्क पड़ा हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो ये पड़ा कि दोनों बड़े बच्चे जो हैं वो एक स्कूल में जाया करते थे। उस स्कूल का जो KG सेक्शन था या नर्सरी सेक्शन था, वो नर्सरी सेक्शन वाज रन बाय दिस ब्रिलियंट खातून का नाम है नसरीन बाकर, मिस नसरीन कहते हैं हम सब उनको, और उनके गिर्द एक पूरा टीचर्स का सिस्टम था और वो सब बहुत एक्सपीरियंस और पुराने टीचर्स हैं। दिस इज़ KG1 KG2 KG3, राइट? तो नसरीन से हम जाके मिले, नसरीन को पहले ही बता दिया कि हमारे बच्चे के साथ चैलेंज है, एंड शी सेड कि आपके दोनों बच्चे हमारे पास हैं, हमारा एक प्रोसेस चलाते हैं, हम बच्चों को जज नहीं करते, असेस नहीं करते, हम पेरेंट्स को असेस करते हैं, तो वील सी व्हाट वी कैन डू। तो ताहा का वहाँ पे एडमिशन हो गया, वहाँ पे एडमिशन हो गया तो वो इतना लविंग स्कूल था कि 20 बच्चे क्लास के अंदर हैं और टीचर हैं। For the 4 years that Taha spent in that kindergarten school, which was KG1, KG2, class 1, class 2, the principal, the teachers, they all trained all the bachas around Taha to become Taha's support system. So, Taha की आदत थी कि आपकी नज़र झपकी, Taha भाग गया क्लास से बाहर। So, बजाय कि टीचर भागे, the teacher would send 4 बच्चे कि जाओ Taha को ले आओ, and घसीट के नहीं, प्यार मोहब्बत से लेके आओ, राइट? So वो 4 बच्चे जो हैं Taha के पीछे पीछे भाग रहे हैं, Taha आगे भाग रहा है, बच्चे पीछे पीछे भाग रहे हैं, and then those बच्चे would sort of corral him back into the classroom. Taha का काम नहीं हो रहा, अच्छा Taha के साथ बैठ के काम कर लो, अच्छा Taha सीखने, Taha को दिखा दो कैसे करना। So वो 4 साल उसको जो मोहब्बत मिली बच्चों से भी, टीचर से भी, that became a huge second anchor. और थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरवेंशन के पर्सपेक्टिव से, जो शुरू के 6 या 7 8 साल हैं वो बहुत भारी होते हैं, बिकॉज आप बच्चे की स्कूल से पहले थेरेपी है, फिर स्कूल है, फिर स्कूल के बाद थेरेपी है, फिर आप घर आएंगे, बाकी 2 बच्चों को भी लेकर आएंगे, फिर दोबारा थेरेपी है। सो आपका पूरा हफ्ता और दिन निकल जाता है। इसमें आई थिंक
I have a very close personal friend, Ali नाम है उसका. तो Ali is a med ped specialist and he has worked in a specific field. जब पहली डायग्नोसिस हुई थी and been gone to Ali for a second opinion, मैंने अली से कहा कि यार मुझे शिकायत ये है कि वो मेरे घर में तो बच्चा नॉर्मल रहता है, मुझे नॉर्मल लगता है, जब मैं उसको घर से बाहर निकालता हूँ तो पागल हो जाता है. तो how do I manage this? I have an issue with the fact that the environment is causing too much interference and this is the reason why doctors may not be able to diagnose him correctly. तो तुम घर आ जाओ. Ali came home and अली ने हमारे साथ कोई घंटा सवा घंटा गुजारा एंड ताहा घूम फिर रहा है, जैसे कमरे में घूम रहा है, उसके भाई बहन भी हैं वहाँ पे, सब कुछ हैं. एंड अली आफ्टर एन आवर सेड कि देखो आई विल टेल यू समथिंग. एंड दैट्स व्हेन ही सेड ए early diagnosis is a question mark. There's a lot of labeling. I'm not sure कि तुम्हारा बच्चा स्पेक्ट्रम में कहाँ है, but I am sure that there is a delay. So you need help. So this we cannot deny. So you need help, right? तो ये accept कर लो. तो अगर तुम्हारे जहन में मेरा बच्चा नॉर्मल है, डॉक्टर सारे पागल हैं, तो ये अपने जहन से निकाल दो, डॉक्टर पागल नहीं है. There is a question mark and you need help. So seek help. This is one. But I think the second thing that Ali said has always stayed with me, and I think this is something really, really important. And he said, you have to make a decision and you have to make a choice. And that choice is either you can have your careers or this child can have his life. You can't have both. तो अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और फाउंडर बन जाएंगे और आप दुनिया में बिलियन डॉलर की कंपनी चलाएंगे, तो आप कर सकते हैं. आप ऑलरेडी इस बात के ऊपर आप कर लें, फिर बच्चे को भूल जाएं. और अगर बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको भूल जाएं. And this works for both of you. This works for both you and for Fazia. So you have to decide. You have to make a choice. Okay, what is the priority in your life? Is this child, is Taha your priority, or is your career priority? If your career is priority, then you will do whatever needs to be done for the child, but it won't be enough. This is one. Then the second thing is the thing that I think is the most important advice that we've got, the best advice we've got. He says, ये एक आदमी का काम नहीं है. You can't say कि मैं बाहर जाके काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, तुम घर चलाओ, बच्चे को पालो. You both have a role to play in his development. You have to take him out, you have to read him. She has to take him out, she has to read to him. You have to feed him, she has to feed him. He will pick up his personality, his character, you're both role models for him. And you both need to be around. He cannot have a single role model. तो अगर तुम्हारे लिए ये चीज़ acceptable नहीं है, this is going to cause a lot of problems. You have to decide today that this is a job that you will both share and you will do and take care of this equally well. तो अली ने भी बात कही, 2-3 थेरेपिस्ट और हमारे पास जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी ये बात कही कि आप पढ़ें, बच्चा पढ़े ना पढ़े, सुने ना सुने, डजंट मैटर. सुबह पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, रात में पढ़ें, सुलाने से पहले पढ़ें, तो उसका एक रूटीन बना लें और रूटीन को डिस्ट्रीब्यूट कर लें. और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि एक वक्त में एक आदमी के पास कम से कम सांस लेने की गुंजाइश हो. तो जो ज़िंदगी चल रही है आपकी, उस ज़िंदगी में अगर आप अकेले ही चले जा रहे हैं तो फंस जाएंगे. तो कम से कम ये करें कि अच्छा चलो मैं घंटा पर गुजारा हूँ उसके साथ, तुम करो. फॉर एग्जाम्पल अमीन एंड सलवा बोथ यूज्ड टू ट्रेन एट नेशनल कोचिंग सेंटर. तो ताहा को माई रूटीन, वन ऑफ द रीजन पीपल आस्क मी कि आप 12 बजे घर क्यों चले जाते हैं, इज बिकॉज वन ऑफ अस वुड ड्रॉप द किड्स, वन ऑफ अस वुड पिक देम अप एंड देन टेक देम होम. एंड फिर 12 बजे 1 बजे बच्चे को लेके आप तीनों बच्चों को लेके घर पहुँचे. एंड देन योर नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि अच्छा आप खाना खाओ फटाफट क्योंकि ट्रेनिंग के लिए 4 बजे जाना है. 4 बजे आप निकले. अब 4 से 7 जो 3 घंटे मैं, दोनों बच्चे और ताहा नेशनल कोचिंग सेंटर में घूम रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. सो दैट वुड बी फाजियाज ब्रीदिंग स्पेस. बाकी सारा दिन तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आपके पास मी टाइम हो. तो वो 3 घंटे वुड बिकम फाजियाज मी टाइम. And in the beginning, it would be all of us would go, right? But then we sort of said, Kenny, there's no sense in all 4 of us going, all 5 of us going. तुम घर पे रहो, मैं बच्चों को ले जाता हूँ. अच्छा फिर वो कहा कि वो सेफ स्पेस बन गई, वो एक्सप्लोरेशन बन गई. And you would be surprised at how much चाहत and मोहब्बत is there in the world. Because बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है कि ताहा तो घर में नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन देवर अ कपल ऑफ बुड्ढे अंकल जो वहाँ पे चला करते थे.
वो ताहा को बहुत अच्छे लगते थे फॉर सम रीजन, मे बी बिकॉज दे रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज दादा। तो ताहा वुड सॉर्ट ऑफ, वो बेचारे चल रहे हैं और ताहा वुड घुस गया उनके साथ में चल रहा है। अच्छा, समटाइम्स दे वुड गेट अपसेट, समटाइम्स वैसे ठीक है। एंड देन वो नमाज पढ़ने जाना, ताहा भी साथ में नमाज पढ़ने चला गया। एंड आई थिंक नमाज में दिस बिकम्स अ चैलेंज बिकॉज सम पीपल से कि जी बच्चा आ गया, नमाज खराब हो जाएगी हमारी। एंड देयर वाज अ क्लियर ग्रुप, देयर वाज अ ग्रुप दैट वुड से कि आप फिक्र ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ दें। एंड देयर वाज अ ग्रुप दैट वुड से कि नहीं, इसको हटा दें यहाँ से। तो वो तहा की जगह बन जाती थी वहाँ पे। एंड तहा में अब आप ये भी सोचें कि बच्चा जो है शॉर्ट्स में, और छोटा सा बच्चा शॉर्ट्स में, आप नमाज जमात के साथ पढ़ रहे हैं और बच्चा घुस गया पीछे। मुझे अभी भी याद है जो पहली तहा की ईद की नमाज थी, मैं अब्बा को और बच्चों को लेके गया और तहा मियाँ वेंट इनटू रॉकेट रूटीन। तो मैं उनको उठा के लेकर आ गया बाहर, और हमने गाड़ी में बैठ के पहली थी नमाज पढ़ी थी। बिकॉज गाड़ी वॉज द ओनली प्लेस वेयर तहा वॉज स्टिल अ रॉकेट, बट इट वॉज अ विजिबल रॉकेट। मस्जिद तो बहुत बड़ी होती है ना, तो आप मस्जिद में सफ़ों के ऊपर लोगों को फैलाते हुए कहाँ जाएं? बच्चा वहाँ भाग रहा है, आप यहाँ भाग रहे हैं। तो Ali's advice two things: make a choice and split the work, and make sure that you both have breathing space. I think this was the best possible advice we got, and this happened right at the beginning. तो फिर उसके बाद आपको then you start making choices. Yeah, I remember. I can relate to so many of these things because when we started therapy for Tahan Mano, I scaled back my work routine to three days a week Yeah. because obviously it was uh, uh, a lot of back and forth in different places. But one thing that you mentioned, the right therapist, uh, because in my experience, what happened, because one of the advice that we got was that take them to mainstream school. Although in our case, it was the half advice. The rest of the advice was a mainstream school that has shadow program. Yeah. And we didn't know about shadow program Yeah. back then. And so they would go to school and they'd go to therapy. But uh, after about a year, I started to see that they feel they're being punished Mm. because they go to school and then they go somewhere else. Yeah. And there is more coaching and more stuff happening there. Yeah. And over a period of time, I realized this was primarily because therapists are and they feel okay, यहाँ में शायद कुछ सजा देने के लिए भेजा जाता है. How do you see, because you talked about कि डॉक्टर्स के साथ जब आप पहली दफा एक रिएक्शन आते हैं कि भाई इसको क्या पता है, इसने तो ऐसे ही देखा और बता दिया, एंड यू टॉक्ड अबाउट इट एट लेंथ. बट हाउ डू यू सी कि अच्छा ये थेरेपिस्ट is and I know micro indicators are always there, Yeah. but micro indicators are such a challenge because there are always relapses and back and forth improvements आती हैं, फिर पीछे हो जाती है सब चीजें. So you can't really base your decision on, let's say, micro indicators. What are the macro indicators, let's say, you see when you're working with a therapist? Yeah, okay, here, this is the right person. देखिए, दो तीन चीज़ें, एक बहुत कड़वी बात है that I'm going to say, which a lot of people are going to hate me for saying it. I'm thinking about whether I should say or not say. You should. You should. थेरेपिस्ट चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है Right. कि वो मैंने सुबह कहा था ना, छू मंत्र फटाफट कटाकट, Hmm. ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट? सो if you think in terms of a therapy program, the structure of a therapy program is that a therapist calls you for a session and he shows your child and you, this is very important, he shows your child and you how to do something, Mhm. and you're supposed to take that back with you to your home and work with the child on it. हमारे यहाँ तो पेरेंट को लग कर देते हो, कहते नहीं आप थेरेपी हो नहीं. That's the first sign. अच्छा, that's the That's the first sign. If you can't observe as a parent, so there are certain stages and phases in the therapy process जिसमें parental involvement is a challenge, and वो शायद आपसे कहेंगे जी अभी नहीं. But the best of therapists. So we have one therapist that Taha has been working with now for about 15 years, Mhm. and her process from day one was कि you need to see कि हम कर क्या रहे हैं, because आपने घर जाके काम करना है. Because मैंने बहुत कॉमन देखा है, मैंने फिजियोथेरेपी पर, बट एनी अदर सेशन they often, most of the therapists that I've seen, they like parent की मौजूदगी में तो नहीं, you guys should No, not. so they'll give you an observation space to watch कि हम क्या काम करें. So जो हमारी पहली थेरेपिस्ट थी, वो बच्चा कमरे में बैठा था उसके साथ, and there was a glass wall, and you could observe from the glass wall कि वो क्या करा रही है. You could also hear कि क्या करा रही है.
हमारी जो सेकंड थेरेपिस्ट थी, स्पीच दोनों स्पीच थी, उनके साथ भी ये सिस्टम था कि उनका थेरेपी रूम था और फिर देयर वाज अ ग्लास वॉल, यू कुड ऑब्जर्व फ्रॉम ग्लास वॉल। ऑक्यूपेशनल में जिनके साथ हम काम करें, जिनके साथ 15 साल से हम काम कर रहे हैं, उनका वो बच्चे के साथ बिठाती हैं आपको कि आप भी देखें बच्चा क्या कर रहा है। एंड देन देयर इज रेंज, राइट? फॉर एग्जांपल माय it's I'm not being flippant, but our most favorite diagnosis from an assessment session was बच्चा आपका बिल्कुल ठीक है, आप पागल हैं, in writing. तो she it said, it says guts. It takes guts to say this to a parent. बच्चा बिल्कुल ठीक है आपका, आप पागल हैं, तो आप अपना इलाज कराएं. So we've had this, but then there are also therapists. There was one therapist that we went and spoke to, and हमने उनसे कहा कि there are therapists who will say to you कि देखें, मेरा काम is to assess the child under normal conditions without any support. Can the child do A, B, C, D, E, F, G? And if the child cannot do, then this is the child problem and your problem. It's not my problem. Mm. And then there are therapists who say that figuring out how to make a connection and engage with this child is part of the therapy process, and I'll take care of it. I'll figure nothing. So it's a function of how you speak, right? Um, the difference between the diagnosis from Ali and the first physician we met was the same. Ali said there is a delay, right? Well, what was the difference? The difference was the bedside manner. Ali didn't walk in and said on day. I told him कि भाई ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये background है. अब क्या करना है? Ali didn't come in and say कि तुम्हारा बच्चा इस कैटेगरी में. Ali came in and said कि पहली चीज, पहला प्रिंसिपल A, दूसरा प्रिंसिपल B, तीसरा प्रिंसिपल C, और अब तुमने करना क्या? And he took his time getting there. उसने घंटा गुजारा, घंटे के बाद उसने टाइम दिया. एंड इट्स नॉट कि अली इज अली के पास बहुत फालतू टाइम है एंड ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस. अली अली जिस अस्पताल में काम करता है, इट्स अ पब्लिक हॉस्पिटल. उसकी ओपीडी की क्लिनिक जो है उसमें, एंड दिस इज अनदर कॉन्वर्सेशन फॉर अ डिफरेंट डे, ही हिज टीम addresses and works through anywhere between 250 से 400 patients in a single day. And तो वो भी जो है, but he took out that time mainly because he felt it was important. And ये छोटी छोटी चीजें make a big difference. So I think जो कुछ जगहों पे your therapist will say things which are very hard, but they need to be said. कुछ जगहों पे they'll say कि जी आपने काम करना है. कुछ जगहों पे they'll show you how to do the work. कुछ जगहों पे they will not show you how to do the work. So जो therapist आपको तैयार करा रहा है कि आपने घर जाके बच्चे के साथ इस तरह से काम करना है, और आपको ऑडिट भी कर रहा है, और आपको गेज भी कर रहा है, आपको असेस भी कर रहा है, आपको फीडबैक भी दे रहा है कि जी आपने काम नहीं किया, कोई जरूरत नहीं आपको आगे अगले सेशन की, जब तक आप ये काम कंप्लीट ना करें. Those therapists are possibly better than those who don't show you what needs to be done. That makes a lot of sense. So, आपने शेडो प्रोग्राम की बात की. हमारे एक्सपीरियंस में और another indicator was so we would take our kids to a doctor clinic जहाँ पर therapist होते थे. And when we would have some feedback about the therapist के ये I think they are handling the kid the wrong way, the answer we would get it कि हम therapist नहीं बदलते जी based on parents input. Feedback, yeah. वो जो भी है, चाहे वो सही है चाहे गलत, because that's not the norm. Yeah. And as a process, I find it fine. But as a parent, as a customer, as someone who also has skin in the game in terms of, because at the end it's our kid, Yeah, yeah. I don't find it like you're not even willing to entertain if there is something wrong happening. So this is not the right therapist for this kid. I think एक जो इसमें मसला है ना, वो मसला ये कि जो evaluation of medical care है वो बहुत सब्जेक्टिव है. एंड हम भी, जैसे हमारी पहली इंटरेक्शन हुई थी, जिन्होंने हमें डायग्नोस किया था, ताहा को डायग्नोस किया था, उनका बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत करते हैं, बहुत क्वालिफाइड खातून है, लेकिन आई थिंक व्हाट टर्न्ड अस ऑफ वाज द बेडसाइड मैनर. आई थिंक द सेकंड थेरेपिस्ट जिनकी हम बात करेंगे कहा कि जी आप बच्चा ठीक है, आप पागल हैं. सो आई थिंक वन बिग चैलेंज इज कि असेसमेंट ऑफ हेल्थ केयर इज वेरी सब्जेक्टिव, एंड a lot of times we react to different triggers. I think one of the most
वेल रिस्पेक्टेड, वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन इन कराची, बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, और लोग उनसे नाराज़ इसलिए होते हैं कि वो पेशेंट को हाथ नहीं लगाते। एंड इफ आई कंपेयर हिम विद समबडी एल्स, जब हम उनके पास गए फॉर नी इशूज ऑफ माय सन, तो मेरे साहबजादे ने उनसे कहा कि तुम सब कुछ ठोक बजा के देख लिया, सब कुछ करा लिया, उससे बहुत सारे काम करा लिए, मेरे बच्चे ने कहा मेरे एक्सरे में ये आ रहा है। एंड ही सेड टू हिम वेरी very simply and very plainly, beta, I don't treat x-rays, I treat patients. Right? So I think bedside manner is very important, and you may be a very phenomenal world-class physician, but your bedside manner may be ek element hai. Second, I think you also have to think in terms of um, physicians lead very hard and difficult lives. So you may be a phenomenal world-class physician, but you may have a horrible bedside manner. Sometimes your challenge is कि therapist की इब्तदाई आपकी गलत हो जाती है, you just start on the wrong foot, and there are other factors, and sometimes obviously there are therapists who are not good therapists at all. But I think from a family perspective, from a physician perspective, आपको दो तीन चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि मैं इनसे क्यों नाराज़ हूँ। क्या मैं इनसे इसलिए नाराज़ हूँ मैंने बात सही से नहीं की? क्या मैं इनसे इसलिए नाराज़ हूँ कि ये मुझे सिखा नहीं रहा है? क्या मैं उनसे इसलिए नाराज़ हूँ कि मेरा बच्चा सही से रिएक्ट नहीं कर रहा? क्या मैं इसलिए नाराज़ हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे रहे? What are the factors? And so the one that we've been now working with for about 15 years, um, she is very much in demand, but she's very harsh with parents. But she's very harsh with parents, and I'm going to say another कड़वी चीज़, कहूँ नहीं कहूँ, क्या है? बहुत हम कड़वी है, we keep it very candid on this बहुत podcast. बहुत कड़वी है। हम मीठी गोली खा लेंगे. थेरेपी का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे को फेंक के चले जाएं। Uh, And I understand this, because when you walking through that denial process, when you're walking through that grief ka process, you want a break. You want an hour of your life where the bacha is not part of your sensory system. And there are therapists who will accommodate that, and there are therapists who won't, and they'll say, no, you cannot shut yourself out. His journey or her journey is part of your journey. You need to participate fully. Class में attention दें, uh, and sometimes that's hard. But again, I think हमारे लिए सबसे important and key trigger was Taha's reaction. So we had one shadow teacher, and Taha ने उसका एक दिन गुजारा, and Taha wasn't verbal उस ज़माने में at this stage, so he wouldn't speak, or he would speak, it'd be gibberish, but you couldn't understand what he's saying, right? What do you want? But you could see that the chemistry between the shadow teacher and Taha was just completely opposite. like generally the good doctors with the bedside manners you're talking about. I've seen particularly old people Yeah. with a good doctor, when they walk into a room, they're excited, they're smiling. Suddenly they light up. Yeah. वो सारे दिन उस तरह Yeah. से नहीं होते, Yeah. Yeah. because they're just excited to even meet that doctor Yeah. and Yeah. and everything. So I want to connect this to कि we're talking about ये जो आपने बात की कि बच्चा आप एक घंटे के लिए you want that kind of like responsibility of you. हमने शैडो टीचिंग की भी बात की और क्वालिटी ऑफ टीचिंग की भी बात करें हम. सो इन माय एक्सपीरियंस व्हाट आई सॉ वाज कि अच्छा टीचर मैटर्स अ लॉट. आई so Taha and was and Mano were going to shadow program, and we had this they had this really good sports teacher जिसने Special Olympics team के साथ थोड़ा सा Yeah. काम Yeah. किया हुआ. Yeah. Yeah. And what he did was he spent 2 weeks with a lot of kids in the school जो shadow program में थे. And after those 2 weeks he created a presentation and invited all the parents, and he had videos of all the kids, and one by one on each slide he talked about कि अच्छा ये बच्चा है, इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसकी ये वीकनेस है, और मेरा ये प्लान है, मैं इससे काम करूँगा, और लेट्स से जब ये 12 साल का हो जाएगा तो फिर विल मेक अ चॉइस, और फिर विल मेक चॉइस कि उसने क्या करना है. तो बता ही वाज लाइक वी वांट टू ट्रेन हिम फॉर स्पेशल ओलंपिक्स. Mm-hmm. और जब अभी हम उसको जनरल ट्रेन करेंगे, और 12 साल की उम्र में आके ही विल मेक अ चॉइस कि वो क्या करना चाहता है, बिकॉज़
And he had a very keen observation. Is like Yeah. he's very competitive. तो जिस Yeah. चीज में घुसता है वो बहुत compete करना चाहता है. Wants to win. He wants to make a run for things and do. Uh, 3 months after that, that teacher is gone because obviously our schools don't pay teachers well. Yeah. So they go away. They go to better opportunities. Obviously, that's the choice they're going to make. Anybody's going to make that choice. And आप देखते हैं in programs में भी and general teaching में means schools, for instance, a lot of them they would get this fresh batch of graduates. Yeah. 20-30 हायर कर लिए हर साल उनको मिनिमल तनख्वाह दी 15-20 हज़ार तनख्वाह दी एक साइड से ज़्यादा दूसरी साइड से इवेंट्स दे ली बिकॉज दे गेट फेड अप एज वेल बिकॉज टीचर्स अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उन पे इतना ज़्यादा काम का बर्डन होता है कि दे डोंट हैव टाइम टू थिंक एंड देन नेक्स्ट ईयर इट्स ऑल ओवर अगेन एंड so a lot of people are looking for alternate choices. So you had a certain experience where was brought to a certain point and then you had to make a choice. But that choice is basically out there for parents for different reasons. Yeah. Somebody Yeah. tried, it didn't really work out, and everything. And you let's say you decide that हमने homeschool करना है. But here is the important distinction that I want to make, or now connecting it to because it's not just that your kid being part of your 24-hour cycle, but एक बच्चा घर के अंदर भी अगर 24 घंटे रहता है, Yeah. so that's probably also not Yeah. healthy for that kid as well. Yeah. So we're talking about homeschooling here, but essentially we're not talking about home. No, we're not. So, and now let's bring the space back into it as well. कि wide variety of reasons parents have to make this choice. But how do you figure this out? How do you go about doing it? देखिए मैं आपको एक बात आई विल से एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट हियर मैंने ज़िंदगी में बहुत हिमाकतें की हैं एंड मोस्ट ऑफ द हिमाकतें दैट आई हैव डन स्टार्ट ऑफ बाय मी नॉट नोइंग दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू वाज पॉसिबल तो जब हमने ये होम स्कूल स्टार्ट किया फाजिया वाज वेरी क्लियर इन हर माइंड कि वी आर पॉसिबली मेकिंग अ मिस्टेक बिकॉज वी पॉसिबली क्लोज अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर ताहा बहुत सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे बिकॉज वो बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं होगा if I had the capacity to evaluate all the challenges, all the issues, all the problems, all the factors that were involved in even running a basic homeschool, मैं कुछ अर्से पहले I was giving career advice to a बच्चा in our family and I said to him कि सारी ज़िंदगी आप सोचते हैं कि there is a path and you think you know you'll do A plus B plus C plus D and that'll get you to E or F, but the reality is that in most instances there is no path. In most instances, I think accepting the fact that there is no path, that there is a journey that you're going on, but you're actually not sure how it's going to turn out, is a really hard lesson to learn. So if I look back, I'd say, oh, हमने बहुत सोच समझ के, बहुत होशियारी से, बहुत अक्लमंदी से काम किया, ऐसी कोई बात नहीं है. I think मैंने आपसे पहले भी कहा था कि if I had the mental capacity or the ability to think and think things through, to look at all the challenges, all the problems, all the issues associated with opening a homeschool, maybe you wouldn't have done that. एंड अगर आप अगर हम फाजी और मेरी बात करें तो माई टेक वॉज के दिस इज़ अ बैकअप ऑप्शन, दिस नॉट अ मेन ऑप्शन. हम साल 1.5 साल 2 साल जब तक तहा का एडमिशन नहीं हो जाता उस तक हम इसको चलाएंगे, देन वील सी हाउ इट गोज. एंड फाजिया टेक वॉज कि नहीं, माई प्राइमरी गोल इज कि उसने मेन स्ट्रीम जाना है. बट 8 years down the road, 8 years before, in 2015 when we started this, we had a very clear cut goal. Taha is going to go through 8 years of prep and he's going to take his O-level exams. 8 years later, our take is कि नहीं, examination is not the path. There is a different path. So the path also keeps on changing. मुझसे बहुत दफ़ा लोगों ने कहा और पूछा, फाजिया से तो तकरीबन ऑलमोस्ट दिस इज़ अ डेली कॉन्वर्जेशन दैट शी हैज़, कि आप इसे एक्सपैंड क्यों नहीं करते? 3 बच्चे हैं आपके पास, 4 टीचर्स हैं, तो आप और कर लें. What is not clear to people is कि this is not a commercially viable model. जो एजुकेशन की डायनामिक्स है वो बहुत सिंपल है. एक टीचर, एक असिस्टेंट टीचर, 30 बच्चे, एंड bulk of, and not just in Pakistan, it's all across the world,
30 या 20 होंगे, 15 होंगे, 25 होंगे, बट नंबर उसी बॉल पार्क रेंज के अंदर है. स्पेशल नीड्स मॉडल इज वेरी डिफरेंट. स्पेशल नीड मॉडल इज एक बच्चा एक टीचर, समटाइम्स एक बच्चा 4 टीचर, समटाइम्स एक बच्चा 3 टीचर्स. सो वो मैथ डजंट वर्क. एंड to try and figure out how to make it work is a huge challenge. I think for us, it is no credit to us. अगर हम आज यहाँ खड़े हुए हैं तो उसकी वजह ये नहीं है कि हमने कोई बहुत अक्लमंदी का काम किया. हम यहाँ इसलिए खड़े हैं बिकॉज अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि उसने बहुत सारे दरवाजे जो हमारे ख्याल से हमारे जहन में बंद हो चुके थे खोल दिए, और कुछ दरवाजे तो उसने लिटरली खोल के रखे और हम इधर उधर देख रहे थे, हमें नज़र नहीं आ रहे थे. तो व्हेन आई कम बैक एंड आई लुक बैक एंड आई से कि इफ यू आस्क मी 8 years ago कि आप एक स्कूल खोलेंगे और वो स्कूल का फ़ायदा ये होगा कि आपका बच्चा वो लेवल एग्जाम नहीं देगा, तो मैंने कहा मैंने स्कूल नहीं खोलना. बट 8 साल के बाद, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, आफ्टर सीइंग हाउ ताहा हैज़ ग्रोन, द थिंग्स दैट ही इज़ लर्न, the experiments that he's done, the stuff that he does, मेरे साहबजादे जो हैं वो एनिमेशन पढ़ें. एंड 2 दिन पहले मेरी उससे बात हो रही थी. मैंने कहा तुम अभी आओगे यहाँ पे समर में छुट्टी पे, तो तुम्हें थोड़ा सा काम करना है ताहा के साथ. उसने क्या काम करना है? मैंने कहा हम उसको अनरियल पे ब्लू प्रिंट इस्तेमाल करके एक सिंपल, वेरी बेसिक, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल शूटर गेम बनाना सिखाना है, जो बना लिया उसने. तो ही नाउ नोज, ही नोज कि मैंने अनरियल खोलनी है, मैंने इधर जाना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. एंड एट द एंड ऑफ इट ही विल हैव अ गेम दैट ही कैन प्ले. ही इज डन दैट. एंड पार्ट ऑफ दिस, the credit for this goes to the two teachers who've spent a lot of time over the last 10 months working on this. And you know what Amin said? ये तो मुझे भी नहीं आता. Right? So that one line, ये तो मुझे भी नहीं आता, and I will have to learn this. But Taha can do this now, right? Means a lot. Now, when I say this, when you look at the game, you say, यार ये क्या तूने बच्चों वाला काम किया है? But it always starts with बच्चों वाला काम. This school, when we started, was a बच्चों वाला काम. हमने कहा कि हमारा बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं होगा, तुम क्या करेंगे? तो स्कूल खोल लेते हैं, 2 टीचर्स रख लेते हैं. जितनी हम फीस, लिटरली द मैथ वाज कि जितनी हम फीस ताहा की देते हैं और जितनी हम फीस उसके शैडो टीचर की देते हैं और जितना हम पैसा खर्च करते हैं उसको छोड़ने में, पिक करने में, वो बजट है हमारे स्कूल का. उस बजट में 2 टीचर्स रख लेते हैं. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. बट देन इट्स ग्रोन फ्रॉम देयर इन डिफरेंट डायरेक्शन. ये सब लंबी चौड़ी कहानी सुनाने का जो मेन पर्पस था वो सिर्फ ये था कि जो आपके पास मौजूद है, जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू मेक इट वर्क विद इन दैट. अगर आप इंतज़ार में रहेंगे कि नहीं मेरे पास 4 कमरे होंगे तो मैं स्कूल चलाऊँगा, मेरे पास 6 टीचर होंगे तो स्कूल चलाऊँगा, इब्तिदा तो करें. आई थिंक एक जो मैंने शुरू में भी यही चीज़ कही थी कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी डिड द स्कूल वाज बिकॉज एज अ फाउंडर, स्पेशली अ टेक फाउंडर, we jump first, we look later. So this was a case of jumping first and looking later. Sometimes in life you have to make choices where you have to jump first. Um, Sometimes those jumps turn out to be very well. Sometimes you regret them for the rest of your life. Yeah. So that's the risk that you have to take. I'm not sure if I answered your question. No, no, you did. So that brings me to my last question, and then we'll move to the segment. Um, how did you take this learning? Because you've taught in mainstream and higher education primarily as well. How have you taken the learnings from this place? जो जो ये सारा आपने आगे लिए सिस्टम में डिजाइन किया, everything to mainstream, because that's, although we talked about it, that's an entire podcast or perhaps a entire series of podcasts to start talking about mainstream education. But what were the key learnings you took from here and you applied in your class when you talk to neurotypical kids or you maybe taste? I think the most important one, this is very personal, because I've seen this happen multiple times, not just with Taha, but also with other children. Don't give up on my child. So that's one. So I think एक जो बहुत बड़ा फ़र्क आया है मेरी थिंकिंग में because of Taha is when I look at a बच्चा who's struggling in my class, my first reaction is, what if I replace this with Taha?
What if Taha was sitting in front of me? What would I do if that would be the case? That's one. That doesn't always work well because as mainstream teachers we have thresholds, and you can expand those thresholds to a certain extent, but the bacha has to work with you. So sometimes the bachas that I work with work, and sometimes the bachas that I work with don't work, but at least I give them that chance. So that's one thing that's changed. I think the second चीज़ हमने सीखी है तागे साथ में सीखी है कि चीज़ें सिखाने के बहुत सारे मुख्तलिफ मॉडल्स हैं. एवरी चाइल्ड लर्न्स इन अ डिफरेंट फैशन. कुछ बच्चों को पढ़ना पड़ता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे अपने जहन में सोचते हैं. एवरी चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम अ डिफरेंट पैटर्न. एंड एज टीचर्स, दिस इज सेकंड बिग लर्निंग. A lot of times we think our job is to come in the class, teach and leave, and it is the job of the bacha to learn, and if the bacha doesn't learn, that's his problem. That doesn't work. I think as teachers we have to aggressively think of everything that we can do to make the learning experience more wholesome. And when I say more wholesome, it is essentially, it is not enough for me to walk in the class and teach. I also have to assess and gauge कि बच्चे ने सीखा क्या, समझ में क्या आया. अब फॉर एग्जांपल ताहा के केस में, ताहा यूज्ड टू वॉच डोरा द एक्सप्लोरर. तो I think he was able to count in Spanish before he was able to count in Urdu or English, right? So unos dos tres, right? Cuatro cinco. And we were very happy. इसी तरह से जब मैं और फाजिया उसके साथ, when we read to him in the night, जो उसकी अगेन डोरा की किताबें उसकी फेवरेट किताबें थी, he had memorized what Fazia and I would say without being able to read the words. उसने अपने जहन में कर लिया था. तो he would, when I say Taha read, he would read, and he would read the exact words that both me and Fazia had read. So हर बच्चा learns in a different fashion. You have to figure out what you can do as a teacher, as an instructor, to accommodate the different learning styles. So that's two. I think the third thing is assessment. Assessment is key. जब तक आपने पढ़ा तो दिया बच्चे को, लेकिन जब तक आप असेस नहीं करेंगे, आपके समझ में नहीं आएगा समझ में क्या आया. जब हम ताहा के साथ काम करते थे तो a lot of times you would tell the teachers ये कर तो रहा है, but does he understand what he's doing? How do you find that? So you're a great teacher, you're a phenomenal teacher, you teach a phenomenal course, you've got great feedback, but there must be some mechanism for you to try and understand कि जो आपने पढ़ाया है क्या वो बच्चे के समझ में आया, एंड दो, नंबर टू, क्या वो बच्चा उसको अप्लाई कर सकता है in a generalized context. If you change the context, you switch the context, you give him something else which requires him to bring the same principles that you've covered in the class, can he use those principles to solve a problem that he hadn't seen before? I think ये चार चीजें are very important. I think with your answer, you have opened a new Pandora box, but we won't go there because I think there is a lot of new research coming in which is questioning the core of do we learn in different ways or not. And I believe that our personal experience that stands for the stuff that you're talking about, but there's new research happening on that front as well. Perhaps we'll have you back maybe on another episode down the road, and we'll talk about that. So with that, we'll move to some segments that we have added in our podcast. And you being a teacher and an author, we are going to violate some of the rules today because normally we stick to the topic and ask questions about that. But so पहला हमारा segment है मेरा दम और हम उसमें what we want to ask you is, because you're an author as well, uh, what is that one book that you read that you really liked and you want to recommend, and what is it that you liked about that? एक किताब एक किताब करनी पड़ेगी, मुश्किल में डाल रहे हैं हम. एक किताब जो बहुत अच्छी लगी, अपनी नहीं करनी, कंपनी की मजबूरी नहीं. I think current context, I think one that I read, I wish I'd brought it with me right now, that I think everybody should possibly take a look at. एक किताब है ना, एक film. I just read Genius Makers by Kate Metz, which covers the timeline and the people involved in AI all the way from Minsky to DeepMind. And from a marketing perspective, Google did a movie called AlphaGo, and AlphaGo is one of the things that that Kate Metz and Genius Maker covers. So अगर आपका
आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है और आप AI में इंटरेस्ट है, ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, I'd recommend के Kid Maths, Genius Makers and AlphaGo, the YouTube film, 90-minute film that goes along with it. दो चीज़ें. It's not my favorite book, but this is the last book that I read. This is amazing because this does connect to the next segment, and I'll come back to it shortly. So our next segment is public ने पकाई, और like I said, हमारे दो listener हैं, तो उन्होंने हमें 3 सवाल भेजे. Oh, very good. So, but before we connect this to AI, first question is basically, let's go back to, you talked about goals. You talked about not setting those goals, but those goals being having a lot of variance, because it's kind of like a journey of discovery as compared to going to a destination. Up, and then the मेरे लिए बड़ी surprising चीज़ थी, वो ये थी कि you and your wife had very different thought process and goals about कि outcome क्या निकलेगी जो हम करने जा रहे हैं. She's the more intelligent and She is, I'm sure. Oh, absolutely, and we'll have her on the podcast. absolutely. So, but She didn't know that we were going to talk about this. Otherwise, she would have come. so, so how does a couple sit down and have a conversation about education of their child? What are the ground rules you said? Because जो आप बता रहे हैं मुझे, ये तो धमाकों वाला ग्राउंड रूल, मतलब ये तो धमाकों वाली सिचुएशन है. कितने वेरिएड गोल हैं कि one parent want the kid to go back to mainstream, the other wants to maybe run an experiment, see what comes out of it, or maybe doesn't know क्या होना है क्या नहीं होना है and everything. Uh, so how does a couple sit down and have this conversation about education of their kid? What are the ground rules? Oh, this is a hard one. This is a really hard one. I think हमारे पास कुछ वो हैं frames of references हैं. I think एक frame of references is fair and equitable. Have we done the same thing for our other bachas? And how would the other bachas feel about this if we did or did not do this with them or for them? And for example, Amin Mian ne jab when it was time for him to apply to schools and universities, so he gave his SAT and we said कर लो तुम apply, अगर हो जाएगा scholarship मिल जाएगी, फंडिंग मिल जाएगी तो चले जाना, और अच्छे स्कूल में होगा तो जाना, वरना नहीं. तो जब सलवा का टाइम आया तो सलमान फाजिल ने मुझे यही कहा कि उसको तो करने दिया था तुमने, इसको कैसे याद नहीं सकते. शी ऑल्सो हैज टू गिव if she wants to. If she doesn't want to, then that's perfectly fine. फिर अमीन came to me and said मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, मैं मत पढ़ो. तो when सलवा came, मुझे फिजिक्स नहीं पढ़नी, प्लीज ठीक मत पढ़ो. आपने अमीन से कहा केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते तो सलवा से भी कैसे देंगे आप केमिस्ट्री फिजिक्स ना पढ़ो. आई थिंक ताहा के केस में we started by acknowledging that we're not sure what the right answer is. We're not sure whether we had the right answer. We're not sure कि जो हम करने जा रहे हैं वो सही है गलत है. But we said कि हमारे पास choices क्या क्या हैं. तो Fazia's take was कि I'll explore the mainstream choice. मैंने कहा तुम वो explore करो. I said मैं ये backup में बना रहा हूँ. This is just my backup option. And it's not just limited to choices with respect to children's education. It is also limited to, there are lots of time when she says, जैसे हम therapist की बात की, right? She would come back and say कि मुझे नहीं करना चाहिए काम. And I say कि क्यों नहीं काम करना, right? What is it that you don't like? And then he would say कि A, B, C, D, E, F. And if A, B, C, D, E, F makes sense, then I would say ठीक मत करो. It's your call. You decide because you're there, and I'm just sort of looking at it as an observer. There was an area which was very interesting, which is called micronutrition. छोटे-छोटे elements हैं that you experiment with to try and change. Gut bacteria का बहुत बड़ा रोल है, B12 का बहुत बड़ा रोल है on the spectrum that you would want to run, right? And you have to think about it कि सही है गलत है पीछे क्या है. And she would download papers and send it to me, ये पढ़ लो. Doctors was very interesting. हम दोनों पागल हैं, and the doctors would call us out. I think one of the most famous physicians in Karachi said, "You are resistive parents." And we asked, "What does that mean?" She said, "सवाल बहुत पूछते हैं." मेरा बच्चा है, सही. मेरे बच्चे भाई, I have a question. अब अगर आपका मॉडल ये कहता है कि जी मेरे पास पेशेंट से बात करने के लिए 3 मिनट हैं, तो फिर that's the wrong model. If I have questions and I want to answer, I'm not challenging and questioning your judgment. Just like when Amin asked Dr. Saab, मेरा तो एक्सरे ये कहता है, he gave a really solid response, which was, I don't treat x-rays, I treat patients. And I take that. And he didn't have to spend 4 hours explaining it. ये होता है. He just said, I treat patients, I don't treat x-rays. So give me an answer that makes sense. If you don't give me an answer, for example, जब मुझे कोविड हुआ, मैं मरा था, तो मेरी हमारी जो फिजिशियन है, she said कि आप लगा लें इंजेक्शन स्टीरॉइड के. सॉरी, लगाए नहीं, वो खा लें, गोलियां खा लें स्टीरॉइड के. And I said okay, because I trust her, and that saved my life.
And even at that point in time, there are people. ये हम बात करें November 2000 की. There wasn't a cure. There wasn't a tested, valid treatment protocol. There was just enough evidence, and she had that evidence that said कि ये point है, if you miss this window, then you're gone. एक दफा fibrosis हो गया lung के अंदर, patient is gone. And before fibrosis, there's a small window जिसमें you give steroids, and if you take steroids in the right doses, then that can save your life, and it did. So it's also a function of कि आपकी उस physician से relationship कैसी है, conversation कैसी है. Ali, for example, uh, we went to school together, we ran together, we shared a lot of common dreams कि हमने क्या क्या करना है, बड़े हो गए क्या करना है, तो बड़े हो गए. And अल्लाह का बहुत एहसान है कि we are still very good friends. So when I have need for an opinion, Ali is the person I call. And Ali is very balanced. He doesn't say कि मेरे पास सही जवाब है या गलत जवाब है, ये करना है ये नहीं करना. कुछ चीज़ें हैं जिसमें he is very unforgiving, where if you say कि where he knows for a fact कि this is the right move and this is the wrong move. But कुछ चीज़ें जिसमें he says कि I don't have the answer. कुछ चीज़ें कि नहीं, you cannot do this. You will not do this. If you do this, I will not talk to you again. I hope I answered your Right. question. So, you did. So let's move to the next question, and this question is again attached to you being an author. Okay. As an author, what do you think of generative AI? यार मैं ट्विटर पे भी हूँ. You're known for writing long threads on. Yeah, ट्विटर पे there is not a day when I see a thread that says कि मैंने हज़ारों डॉलर बना लिए जनरेटिव एआई से, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, राइट. एंड आई हैव डन सम ऑफ दोस थिंग्स, राइट. बट आई हैव अ कपल ऑफ इश्यूज. मैंने $1,000 नहीं बनाए, ना हज़ारों बनाए विद जनरेटिव एआई. That's one part. Maybe because I'm Buddhu and not that smart or not that sharp. But I think the fundamental question that comes to my mind with respect to generative AI is, why do I write? Why do people write? Why do I? So if I ask me, why do I write? Self-expression. Sometimes it's therapy. So reboot, Giri, right, was therapy. Founder's puzzle was not therapy, but sort of was close to therapy. Sometimes it's therapy. Sometimes we using it to understand and learn something that we don't understand very well. Sometimes it's because it gives us relief or release that we can't find in other forms of engagement or expression. So how does generative AI help me with that? It doesn't. That's one part, right? Second is, अभी मैं कोर्स की आउटलाइन लिख रहा था तो और AI से रिलेटेड आउटलाइन थी, मैंने कहा चलो हाँ ऐसे पूछा तो it'll be ironic. So I spent 4 hours, walking through, and there's some really good guys who've shared a lot of really interesting, solid prompts on triggering and setting and priming AI properly so you can get the right responses. I use all of those. 4 घंटे लगा के मेरे ख्याल कोई 125 पेजेस जनरेट हुए होंगे जनरेटिव एआई की चैट जीपीटी की आउटपुट से. Net usable content in those 125 pages was how much? Couple of pages. 4 लाइनें. That's all. तो 4 घंटे वो लगाए, फिर उसको देखा भी, रिव्यू भी किया. Now there's a very reasonable chance that I am not smart enough to appreciate this technology. There's a very reasonable chance that I'm doing it all wrong. But there's one key thing that has been the central driving principle in my life, and that is, what is the purpose of what you're doing? And I'm sure there are people around the world who have found their purpose with AI, but I have not been able to get there as yet. इसको हम अगले क्वेश्चन से टाइन करते हैं, which is because I'm always very fascinated about AI in general, not just generative AI, with large language models now and large language models to internet से connected. I was just looking through a medical AI, and I'm fascinated by you can literally, let's say, feed a kid's profile, and it starts coming up with recommendations, and those recommendations perhaps
not just month, a few weeks down the road, that AI will be in a position to come up with a complete action plan and now replace feeding that kid's information with just feeding. So we'll get to a point where it's like you don't have to tell AI कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, because let's say Google has our kids from very early age to now, their pictures, their videos, and videos are immense amount of data and in terms of what they're doing in it and everything. All that data fed into let's say an AI gives a deeper understanding of a person because it's all behavioral data. And now combining that with let's say something like a curriculum, see how effective it will be on that kid. Does that thought fascinate you? Is it like yeah, this sounds like trouble? What's your view on that? मैंने 2000 नहीं 1994 और 1995 में I had made this prediction to my team that अगले 10 साल में कीबोर्ड्स खत्म हो जाएंगे दुनिया से because our ability to process speech would grow at such a fast pace and we'd get so fast, so high, so quickly that we just speak to machines. We do, right? So now that happens. But our keyboard still around? Still around, right? So one of the things that I've become very, very clear about in my mind is that technology will always surprise you. Technology will always have use cases that you haven't anticipated and looked at. And if there is a model in the world where I could sort of feed in information with respect to about person A and get a individualized learning curriculum out for them, I would certainly want to use it or try my hand at it. I think there are certain things in specialized spaces where AI will play a phenomenal role. So again, DeepMind and AlphaGo, the two examples it gives of AlphaGo beating the European champion and the world champion, clearly says, And coming up with new moves to do it. yeah, clearly says that they improved their game because they hadn't met an opponent like AlphaGo before, right? So it certainly improves your game. And chess again, if you play at grandmaster level on a regular basis, it'll certainly improve your game. So there are certain benefits. I think my challenge with AI is not with respect to useful applications and use cases of AI. My challenge is purpose. And I think बहुत सारे लोग चूरन बेच रहे हैं without understanding the sense of purpose. Like any buzzword. Yeah. So चूरन ना बेचें. Find purpose, and if this fits into your purpose, then. And उसको वो क्या कहते हैं ना आबे हाथ ना समझे कि बस इसको पी लेंगे तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा without a deeper understanding. There is no silver bullet. This brings us to our last segment. खाना ठंडा हो रहा है. So this brings us to our last segment, and I won't keep you long. खाना गर्म कर लेंगे हमारे पास क्या कहते हैं ना अवन तो हो गए. So this brings us to the last segment. ख्याली पुलाव. And छोटा सवाल ये है कि your background in education and all these experience talked about today, आप जो है वो ज़ेरे तालीम से वज़ीर तालीम बन जाते हैं. तालीम बालगा में और लगा दें ज़ेरे तालीम से पहले तो वज़ीर तालीम बन जाता है. तो आप क्या वो एक मेजर लेंगे, क्या एक मेजर लेंगे जो कोई प्रॉब्लम वाक़ई में सॉल्व करेगा? बिकॉज़ अगर हम 20 साल पिछले देखते हैं, तो जब भी हमको प्रॉब्लम उठाते हैं सॉल्व करने के लिए वी मेक इट वर्स. मतलब देयर आर सो मेनी एग्ज़ाम्पल्स, आई वोंट गो इंटो दोज़ एग्ज़ाम्पल्स. बट वो क्या एक मेजर होगी जो आपको लगता है इट डज़न्ट हैव टू लाइक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स सॉल्व एवरीथिंग. कोई एक प्रॉब्लम कैसे कोई हम सॉल्व करेंगे इस सिस्टम के तहत कि पॉलिसी कुछ वाक़ई में सॉल्व करे एजुकेशन में हमारे? Math, science, and critical thinking. Fix math, science, and critical thinking. So math, science, and critical thinking. And fix it not at college, university level, but fix it at the grade school level. ठीक हो. जब हम बच्चों का स्कूल ढूंढ रहे थे तो जो Nasreen again asked के what do you want from a school, and I said to her कि हमारे बच्चे सवाल पूछते हैं and we are looking for a school जहाँ पे टीचर्स सवाल पूछने को encourage करें, चपेट ना मारें. मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ I run a wherever I teach. Over the years, I sort of build this exercise. I run this exercise, a simulation on groupthink in my class. Good. And in most instances, I show the bachas in my class how groupthink works and what are the issues, causes, and damages of it. Right. So
Why should you accept established, accepted narrative? Why shouldn't you explore a counter narrative? Why should you take things at face value? Why shouldn't you take things at face value? How do you take a skill set or a framework that you've picked up as a student and apply it to a context that you've never seen before? I think ये बहुत crucial skill sets हैं, and I think हमारे पास कुछ बहुत successful, बहुत blessed, बहुत lucky, बहुत fortunate बच्चे हैं who are able to get this out of the system, but majority of our students don't. Creating a system that caters to more than just the outliers who are like have the zeal to get there one way or the other, but अच्छा how बच्चा more तो अच्छा people बच्चा need है ना, वो तो निकल जाएगा आगे, तो राइट? निकल जाए. वो जो, और मेरा बच्चा तो खैर चलें ठीक है, स्पेशल नीड्स है तो अलग खाते में आता है, बट बिटवीन द अच्छा बच्चा एंड द स्पेशल नीड्स बच्चा है बहुत सारे नॉर्मल बच्चे, तो वी मस्ट डू justice to them, right? And the justice doesn't start at the university college level, it has to start at middle school level. ठीक हो गया. With that, I really want to thank you for You're taking welcome. up the time, sitting with us, and doing this podcast episode for our listeners. Please keep listening, keep watching. Do tell us what is it that you like about these podcasts and what are the things that you would like. Thank you so much. Take care. Until next time.